Starting with machine design. Here in machine design we are starting with curved beam design. कर्व बीम को हमें डिजाइन करना है. बेसिकली हम कर्व बीम को पहले समझते हैं कि होता कैसे है. कर्व बीम एक बीम है, आई मीन स्ट्रेट बीम, कर्व बीम, यू अंडरस्टैंड. स्ट्रेट बीम इज अ स्ट्रेट बीम, कर्व बीम इज अ कर्व बीम. इन दोनों में फर्क ये है कि इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है और इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो दोनों सेम होता है इन स्ट्रेट लाइन बीम, और इन कर्व बीम ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड न्यूट्रल एक्सिस, एंड दैट डिस्टेंस इज इसेंट्रिसिटी. It is denoted by E. So we understand here न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है. न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है उसको समझते हैं. मान लीजिए एक कर्व बीम है. इस कर्व बीम को हमने बहुत सारे फाइबर्स में बांटना शुरू कर दिया, लाइक दिस. हियर यू कैन सी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज आउटर फाइबर. सबसे नीचे वाला, सबसे बेस वाला जो पार्ट है दैट इज इनर मोस्ट फाइबर, एंड इसके बीच में n नंबर्स ऑफ फाइबर्स हैं. ओके, तो ये कर्व बीम में n नंबर्स ऑफ फाइबर्स हैं. सबसे ऊपर वाला जो फाइबर है आउटर मोस्ट फाइबर, उसके पास टेंसाइल फोर्स लग रहा है. इफ यू फील दैट हियर टेंशन इज देयर, you can see tension on the outermost fiber, and innermost fiber में you see there is much compression is happening. compression force innermost fiber पे लग रहा है. अब outermost fiber और innermost fiber के बीच में जितने भी fibers हैं उसमें क्या हो रहा है, we see that outermost fiber से जब नीचे की तरफ हम आते हैं then we see इसमें टेंशन फोर्स थोड़ा कम हो गया सेकेंड पे, और टेंशन फोर्स इस पे कम हो गया, फिर इस पे कम हो गया, फिर इस पे कम हो गया. कम होते 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 जब न्यूट्रल एक्सिस पे हम आते हैं वी सी दैट देयर इज नो टेंसाइल फोर्स acting on that beam which is at neutral axis, and we also see that there is no compression force is acting on the beam which is at neutral axis. Neutral axis is a point, is a axis at which there is no force is acting. Basically कुछ भी फोर्स उस पे एक्ट नहीं हो रहा है, एंड वी सी न्यूट्रल एक्सिस पे बीम एकदम न्यूट्रल फॉर्म में है. thereafter जब हम और आगे बढ़ते हैं वी सी यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा है और बढ़ा, फिर आगे वाले पे और बढ़ा, और जो सबसे इनर मोस्ट फाइबर है इस पे कंप्रेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम कंप्रेशन फोर्स है. तो बेंडिंग स्ट्रेस का अगर देखेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस एट इनर मोस्ट फाइबर इज exactly opposite to that because of this is in compression, this is under compression and this is under tension. So here stress is acting and the force is tensile force or tension force. Here stress is acting but force is compression force, and stress distribution is non-linear, it is hyperbolic as seen in the figure. It is hyperbolic. So moving ahead, we understood about what is neutral axis, we understood about what is centroidal axis. Centroidal axis is basically the geometrical mid or geometrical half of the given object. Geometrical half means what? Exactly the geometrical center of the given object is called centroidal axis. And neutral axis, you know, at which the beam feel no tension or no compression force over there. Thereafter we see this is Rn,
This is the center of curvature of beam. Rn is the radius of neutral axis, because this is the neutral axis. In curve beam, what is important point is neutral axis of cross section is shifted towards the center of curvature of beam, always in neutral axis, in curve, in center of sorry, in curve beam. Yes. So in curve beam, what happens? The neutral axis is always leaning towards the center of curvature of beam. In curve beam, the neutral axis is always slightly shifted towards the center of curvature of curved beam. Neutral axis is slightly shifted towards the center of curvature of curved beam. This neutral axis is slightly shifted towards the center of curvature of beam. I am repeating it just because it is the important point to understand why the curve beam is. Thereafter, we understand in linear beam, what we see, centroidal axis and neutral axis are at the same line, but it is not happening in curve beam. Okay. Thereafter, due to this, stress distribution is non-linear, stress distribution is hyperbolic, just because of this shift of neutral axis. Okay. तो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दिया है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, दिस इज स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट. जो भी है बेंडिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं हम. बेंडिंग मोमेंट क्यों? क्योंकि इस बीम पे नेचुरली बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो दैट्स व्हाई वी सी स्ट्रेस एज अ बेंडिंग स्ट्रेस. ये जो स्ट्रेस है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में कहीं भी लग सकता है. तो ये स्ट्रेस है एट बी, इट मे बी एट आउटर मोस्ट फाइबर, it may be at innermost fiber. When we see it is at innermost fiber, we will replace rho bi. When we see it is at outermost fiber, we will do it rho bo. So we are, we can change it depend on the focus of study of beam. You can say on which beam we are focusing, or on which beam we are measuring the stress. Thereafter, we see this is the bending moment M. This is the distance from the neutral axis. Distance of that beam from the neutral axis, and A is YO. Distance of the innermost beam with at the neutral axis, this is yi. So yi and yo will be used in case of whatever we are focusing upon. If we are focusing upon outermost beam or outermost fiber, sorry, the fiber of outermost, the outermost fiber of a beam, then we see that yo divided by Rn is the radius of curvature of neutral axis. That is, you can see here, R is the radius of curvature of centroidal axis, R, and here E is eccentricity or distance from centroidal axis and neutral axis. So this is all about properties of curved beam. जब हम डिजाइन करने जाएंगे, what we see, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ये यूज करना पड़ेगा, एंड बाय दिस वी गेट डायमीटर ऑफ
द गिवन ऑब्जेक्ट, जो भी हमें कर्व बीम दिया है उसका हमें डायमेंशंस ही निकालने पड़ते हैं. तो डायमीटर अगर मिल गया देन वी हैव डिजाइंड अ कर्व बीम. और अगर डायमीटर दिया रहेगा वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच लोड इट कैन सस्टेन. तो लोड कितना ले सकता है. So yes, like this we can design it. So ahead we will go ahead in next lecture. Thank you all.